Okay, good evening, everybody. So now you know that I told you that starting from once we got the Poisson equation and Laplace equation, which is coming from your knowledge of Coulomb's law, then differential form of Gauss law, all those things are related, right? So finally, you wrote the Poisson equation. In charge-free region, it is a Laplace equation. So to get the potential, to get the sense of potential, the first technique was the image problem, which we have done. The second technique was directly solving that equation using differential equation method, which is variable separable method of partial differential equation. That also we have done. And now it's time to handle it in a different way. And actually, ये कोई नई technique नहीं है. This technique we all know. Like in the case of a function, whatever information is hidden out, कोई भी function है, suppose fx, okay? fx is the function, and directly इसको देख के बहुत सारी चीजें हमें पता नहीं चलती. Information is hidden in the function. इसको आप x को time भी समझ सकते हो. It may be function of time, it may be function of position, it may be function of both. So information is hidden, and when we want to extract that information, one straightforward method is writing it into infinite series. Infinite series, ठीक है ना? So फर्मी का ये कहना था कि जब आपको कुछ पता ना चले तो उसको expand कर दो infinite series में. If you are not sure, expand it in the form of infinite series. Okay. So you have a function, information is hidden inside, you expand it, information will come out. जैसे Fourier series में आप क्या करते हो? There is some function, information is hidden in the function, and you expand it. So if it is a function of time, you get to know कि कौन-कौन सी frequencies involved हैं और उनके coefficients कैसे हैं, यानी वो कितनी powerful हैं. Okay, उनका weightage क्या है, right? So इसी तरह से हम पोटेंशियल को अगर एक इनफाइनाइट सीरीज के फॉर्म में ओपन कर दें तो बहुत सारी जो हिडन इंफॉर्मेशन है वो हमें निकल के आ जाएगी. ठीक है ना? मैं इससे क्या समझाना चाह रहा हूं आपको कि जैसे मान लो मेरे पास पोटेंशियल है V r, theta, and that potential is for some charge system. Suppose this is some charge system in some volume capital V, right? Some charge density rho. So information about the distribution of charge is hidden in this system, and if we want to take it out, and what type of information is hidden? Let me first of all understand this. देखो real systems वैसे नहीं होते simple कि there is a charge Q, find the electric field. Real system कुछ complex distribution of charge होगा, plus minus position at a different in a different manner, right? So what will happen कि अगर मैं वो information बाहर लेके आना चाहता हूं तो मैं अगर V r theta के बदले एक इनफाइनाइट सीरीज लिख दूं, एक इनफाइनाइट सीरीज लिख दूं, तो इस चार्ज सिस्टम में जो कि अदरवाइज कॉम्प्लेक्स सिस्टम था उसमें डाइपोल प्रेजेंट है, क्वाड्रुपोल प्रेजेंट है, या फिर सिंगल चार्ज है, पॉइंट चार्ज जिसको कहते हैं, सिंगल चार्ज मतलब पॉइंट चार्ज, या फिर ऑक्टोपोल है, या फिर अदर थिंग्स हैं. ये सारे के सारे निकल के बाहर आ जाएंगे. एंड फर्स्ट ऑफ ऑल अंडरस्टैंड दिस कि दिस इज नॉट ओनली रिलेटेड अप टू इलेक्ट्रोस्टैटिक्स. इन many different branches including nuclear physics, atomic physics, ये टेक्निक यूज करते हैं when we actually make an infinite expansion. Okay, so अब हम जो करने जा रहे हैं,
हमारे पास एक चार्ज सिस्टम होगा तो उसके पोटेंशियल को हम एक इनफाइनाइट सीरीज में लिखेंगे, और जैसे 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 फूरियर सीरीज में होता है कि आप और ज्यादा टर्म लेते जाओ तो आपकी एक्यूरेसी पोटेंशियल की बढ़ती जाएगी। यही तो होता है ना कि फंक्शन में जितने ज्यादा टर्म्स लेते चले जाओ उतने ही ज्यादा तुम्हारा फंक्शन जो लेफ्ट हैंड साइड का है उसकी एक्यूरेसी बढ़ती जाती है, बिकॉज एक्चुअल फंक्शन इज सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स। तो आप इनफाइनाइट तो ऐड नहीं करते, आप जितने ज्यादा टर्म ऐड करोगे सो वो उतना ही अच्छे से ओरिजिनल फंक्शन की मिमिक्री कर सकता है। इट विल मिमिक द ओरिजिनल फंक्शन इन अ ग्रेटर वे। सो यहां पे हम क्या करेंगे कि we will also try to write the potential as infinite series, और infinite तो छोड़ दो, हम अगर 3 टर्म लिख पाए तो पहला टर्म टोटल चार्ज को बता देगा, चार्ज सिस्टम में कितना है। दूसरा टर्म डाइपोल को बता देगा कि क्या टू चार्जेस सेपरेटेड एट अ डिस्टेंस टाइप की चीजें कितनी प्रेजेंट है। अगला टर्म 4 चार्जेस वाले सिस्टम को बता देगा। तो लेट मी टेल यू और ये बहुत ही फिजिकल है because these things actually exist in nature. When we see actual distribution of a system, charge distribution of a system, we find कि उसका डाइपोल कैरेक्टर भी है, उसमें क्वाड्रुपोल कैरेक्टर भी है, उसमें ऑक्टोपोल कैरेक्टर भी है, and all these characters they actually they have some significance and they have some importance. Okay, so जैसे कि टोटल चार्ज तो आप समझते ही हो Q है। Then if you have separation of charge like this minus Q and Q, so you have seen that potential because of this charge at a point at a far point, यहाँ पे सारा डिस्कशन हमारा far point पे होगा। far point means जो सिस्टम का ज्योमेट्री है उससे थोड़ा दूर, उसके ऑर्डर का कैलकुलेशन हम नहीं कर पाएंगे बिकॉज देन वी नीड मोर एंड मोर टर्म्स, इनफाइनाइट अमाउंट ऑफ टर्म्स। जितने दूर रहेंगे उतने कम टर्म्स लेने पड़ेंगे। ओके, सो v is proportional to 1 by r. In this case we will see that v is proportional to 1 by r square, potential dependence. And when you have 4 charges like this, so this is known as total charge, this is known as dipole. Okay, and this is known as, तो जहां भी दो चार्ज सेपरेट हो गए जैसे वाटर मॉलिक्यूल, HCl मॉलिक्यूल, KCl मॉलिक्यूल, इन सब में प्लस और नेगेटिव चार्ज है सेपरेटेड एट अ डिस्टेंस, तो उसमें डाइपोल कैरेक्टर आ जाएगा। एंड व्हेनेवर these things will be put in some external electric field, there will be some effect on it. Okay, molecular properties के ऊपर। So dipole हो गया, then it will increase, you can see the trend. So this is power 1, power 2, power 3. So this will be quadrupole, and then we can make something like this. Okay, like plus Q, minus Q, plus Q, minus Q, and then plus Q, minus Q, plus Q, minus Q, and plus Q. Okay, something like this. And here the dependence will be 1 over r to the power क्या होगा 4. Yeah. Okay. So these type of systems, अभी तो मैंने एक एक बना दिया। In a given volume, combination of such systems are present. जैसे हम बचपन में पहले जब पढ़ना शुरू करते हैं तो हम कहते हैं एक सिस्टम है जो ओमेगा फ्रीक्वेंसी पे ऑसिलेट कर रहा है। फिर जब हम और आगे बढ़ते हैं तो पता चलता है कि एक्चुअली ये तो सुपरपोजिशन ऑफ बहुत सारी फ्रीक्वेंसीज है डांसिंग टुगेदर। लाइक तुम्हारा ऑप्टिकल फाइबर है, हम इतनी बातें कर रहे हैं और सारा डेटा जो है वो उस ऑप्टिकल फाइबर के थ्रू जा रहा है, तो व्हाट इज दैट? इट इज सुपरपोजिशन ऑफ सो मेनी सिग्नल्स डांसिंग एट सो मेनी डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज, और उनके सुपरपोजिशन का रिजल्ट है जो हमें मिल रहा है। ओके, सो सिमिलरली इफ यू सी द चार्ज कॉन्फ़िगरेशन, कोई भी चार्ज कॉन्फ़िगरेशन में ये सारे लोग प्रेजेंट हैं, ऑल दीज थिंग्स आर प्रेजेंट, बट उनका डिफरेंट काइंड ऑफ वेटेज है। किसी में हो सकता है कि टोटल चार्ज 0 हो बट डाइपोल कैरेक्टर हो, जैसे डाइपोल में ही टोटल चार्ज कितना है? व्हाट इज द टोटल चार्ज इन डाइपोल? इट इज 0, right? 0. And suppose a system is there
which is quadrupole. So like Q minus Q and ये सारे हम ऐसे लिख रहे हैं ना जिसमें डाइपोल है सिर्फ डाइपोल करेक्टर है, ये चार्ज है तो सिर्फ चार्ज करेक्टर है, ये क्वाड्रुपोल है तो ओनली क्वाड्रुपोल, इज ऑक्टोपोल octo, so it has only that character, right? Plus Q minus Q plus Q and minus Q. So we will have to write this in the form of infinite series so that हम इन सारे characters को अच्छे से समझ सकें. अब बात समझ में आ गई ना? What is this topic about? And there will be always far point involved ताकि हम कुछ approximations कर सकें. Okay? Otherwise, you know that will be always infinite series जिसके बारे में कुछ कहना बहुत मुश्किल होगा. So there will be always a far point involved जिसके लिए हम कुछ approximate values बता सकते. Okay? Is this okay? Yeah? Yes, sir. Yes, sir. So now let us move quickly and take simplest system, that is electric dipole. Electric dipole. Okay? Let us take this system for understanding point of view. And what will be the electric dipole look like? So मैं ऐसे बनाने जा रहा हूँ कि ये एक चार्ज है suppose plus Q. इस पार्ट को थोड़ा सा फटाफट निकालते हैं. This is minus Q and suppose this is distance D and let me take it as Z axis. Okay, and this is the point P. Okay, and this is angle theta. Right? अब देखो इसको Z इसलिए लिया ताकि आपके spherical polar वाला theta हो जाए. Right? Okay, and you can take it as a theta. Okay. With Z axis, this point is P. Now, because of this charge, there will be a potential here. Because of this charge, there will be potential here. Let me call this as R plus this distance. Let me call this as R minus. And you know what will be the potential. This is so simple. V will be equal to, yeah, tell me, 1 over 4 pi epsilon naught. Bolo bhai, Q Minus and Plus 1 over R plus minus 1 over R minus. Okay, this will be the potential, and this is the center of the dipole, and this is R. So actually, what is my motive? I will try to write it in the form of these two variables. Ultimately, मुझे क्या करना है? मुझे इस dipole के भाई दूरी नापना होगा. dipole में तो कहाँ से नापोगे? center. सेंटर से ही नापोगे. ऐसा तो नहीं करोगे कि यहां से नापो यहां से नापो. So this is one point and this is the angle theta with the dipole. Okay, and conventionally हम एक चीज define करते हैं, dipole moment, and that is equal to Q, positive charge, into this distance, separation between the charge, and we put it a vector here, and conventionally this D vector is from negative to positive. ये याद रखना. ये कन्वेंशनल है, इसमें कुछ भी टेक्निकल नहीं है. एक कोई डायरेक्शन लेनी थी तो वो डायरेक्शन लेनी. ओके, नाउ यू कैन सी दैट इमीडिएटली आपके दिमाग में आएगा कि भाई R प्लस को अब मुझे किसके किसके टर्म में लिखना है? इस स्मॉल r और थीटा के टर्म में लिखना है. राइट? एंड देयर इज अ पैरामीटर D आल्सो which is related to this dipole. So what you will do quickly, you will write R plus square, बोलो भाई, is equal to R square plus D square by 4 minus 2 minus R D cos theta. D and cos of theta, right? और ये वाला एंगल कितना हो जाएगा? 180 डिग्री minus theta, right? This angle will be 180 minus theta. So this R D by 2 cos theta. D by 2, right? D by 2 cos theta. इसलिए कई बार लोग वहाँ 2D लिख लेते हैं. Okay, but that is okay. So if I calculate R minus, it will become R square plus this and plus here. Okay, right? Is this okay? R plus and R minus. So Yes, sir. R plus and minus together, I have written, it will become R square and 1 plus, tell me, D
square by 4r square. 4r square and minus plus 2 यहाँ पे आ जाएगा d by R r D by R. d by r and cos of theta. Yeah. So it will become 2 से 2 cancel हो जाएगा ना? तो 2 भी तो Right? 2 will be cancelled now. To cancel. Okay. So it will become 2 will be cancelled. It will become d by r. Is this okay? Yeah. ठीक है भाई? So इसको जरा क्विकली लिख लेते हैं. तो अगर मैं इसको 1 अपॉन लिखना चाहूं तो पहले तो इस टर्म को हटा देते हैं. अब देखो यहीं से अप्रोक्सीमेशन शुरू हो गया. I am taking r to be much greater than d. That means this point is not very close to this. Okay, it's d parameter से which is the length of the system. उससे ये दूर है. Okay, so this approximation में ये term छोटा हो जाएगा and I will get r plus minus square is equal to r square and 1 minus plus and d by r cos of theta. Is this okay? Yes. And Yes, sir. when you write 1 over, because I need this 1 over r plus minus, then what you will get? 1 over r here and here 1 minus plus d by r cos of theta to the power minus half. Yes. Okay. And now you subtract this. तो क्या आ जाएगा? 1 upon r plus minus 1 upon r minus. So it will become 1 upon r plus. Using the binomial, देखो the beauty of binomial. 1 plus x to the power n can be written as 1 plus nx if x is much less than 1. So because r is greater than d, so we can neglect the higher terms and I will apply binomial. यहाँ पे plus आ जाएगा. So it will become, बताओ भाई क्या हो जाएगा इसकी जगह? So 1 plus minus d by 2r cos theta. 1 plus minus d by 2 r cos theta. देखो आ रहा है? Okay. और जब यहाँ पे तुम subtract करोगे तो it will become q by 4 pi epsilon naught. ऊपर क्या आ जाएगा? q d. Yes. Yes, sir. So d by, I'm sorry, 2 cos theta, na? D by 2r, right? So what it will become? QD cos of theta and over क्या आ जाएगा? R square. R square. So this is the potential due to dipole, which you already know. The purpose was just to why I am deriving it, because I have to do some other important things. तो ये बताना जरूरी है. Is this okay? Clear है भाई सबको? Yeah. yes sir. Yes Yes. sir. Okay. So I will erase this and this will become. So if I write Q, you can see it is QD cos theta and QD क्या है? P है, right? So I can write it as P vector dot R vector. Please see this. P dot R and over 4 pi epsilon naught R cube. This is the potential. Because this is P vector. P vector is from minus to plus. This is P vector. And this is R vector. It is away from the origin if I put it in a vector. And this is the angle between them. So what is the theta? ये ध्यान रखना.
क्वेश्चन जब आता है तो यही भूल जाता है कि थीटा क्या था. This is point P and this is angle theta which is between this R and this P. That is the angle. Okay. तो ये पोटेंशियल आ गया. अब जरा देखते हैं कि इस पोटेंशियल से, so this was in vector form, कोई बात नहीं. Now let us see what will be the field, electric field. So this is VR comma theta, right? This is VR comma theta. So my electric field will be some function of R and theta. So that will have R component also and theta component also. So the first one, and we know that E is equal to minus del of V. That is the only way to calculate the electrostatic field, right? So सबसे पहले मैं component निकाल रहा हूँ R component. What will be that? ER will be equal to, बताओ भाई, minus del V upon del R. del V over del R, right? So what will be the value? जल्दी से बताओ. The value of this. कितना हो जाएगा? Q upon 4 pi epsilon naught R cube into D into 2 cos theta. It will be R to the power minus 2 हो जाएगा ना? तो minus 2 R to the power minus 3, right? So कितना हो जाएगा? 2 2p cos theta. D. 2QD P लिख देते हैं. Yes. 2P cos theta over Cos theta upon 4 4 pi pi r epsilon naught 4 pi epsilon r R cube. So R please cube. see, ये जो फील्ड आई, ये थोड़ा देखने की कोशिश करना. ये जो फील्ड आई वो R cap डायरेक्शन में आ गई ना. Finally it has become positive ना, right? You will put R cap here, so it has become positive. So this field is in this direction, ER. Now let us see the theta field. So E theta will be minus 1 by R del V by del theta, W. right? So it will become Okay. cos theta का differentiation क्या होगा? Minus sin theta. Minus sin theta. So it will become QD Yeah. sine of theta over 4 pi epsilon naught R square, correct? R cube. Oh, sorry. नहीं, Potential. r square ही होगा. Why R cube? R cube. Sir, one R is. Sir, वो r One भी R है. is here, right. One R is here, so it will become R cube. वैसे भी dimensionally different नहीं हो सकता. Dimensionally तो दोनों same ही होंगे ना. So it will become what? P sin theta. Check करो, सही है? अब देखो जरा, ये भी पॉजिटिव आ गया. मतलब ये ER को अगर मैं वेक्टर लगाऊं तो ये R कैप के डायरेक्शन में आ गया, और इस थीटा को वेक्टर लगाऊं तो ये थीटा कैप के डायरेक्शन में आ गया. So what is R cap? ये ER आ गया, और theta cap is in the direction in which theta will increase, right? So theta will increase. अगर इसको मैं ऐसे ले जाऊं, so this is E theta, and they both will give a resultant E that will be under root of ER square plus E theta square. This will be the resultant. You can write the resultant also. एक बार लिखना जरा जल्दी से. It will become P by 4 pi epsilon naught R cube under root of 1 plus 3 cos square theta. This will be the resultant. Yes, sir. So what will be the resultant somewhere here? Na? दोनों का vector sum. This will be the net electric field. So you can just put an angle alpha here and get what is the angle alpha with R cap vector. What will be the net field? Okay. So this is the net field. Got it? So this was just a simple dipole in which
the charge separation was like this. Now, अब देखो एक बहुत ही इंटरेस्टिंग काम करते हैं और वो थोड़ा सा आप लोग की हेल्प चाहिए होगी ताकि फटाफट हम लोग कर लें कैलकुलेशन. This is okay ना? Up to this also many questions have been asked in previous year. Just you have to derive करने का ये फायदा होता है कि you know what quantity represents what value. That is very very important for objective type question. ठीक है? तो अभी क्या करते हैं? Now what I am going to do is I will now consider some general charge system. I don't know about this. This is some charge system in which charge is present and I want to write the potential VR theta. I want to write potential for this. Okay. So we don't know it is dipole, we don't know it is quadrupole, we don't know it is octopole. So that's why the infinite series. So अब जरा ये चीज करते हैं. This is very interesting और ये करना बहुत जरूरी है understanding के लिए कि what is happening. Okay. So let me take a system. So this is actually multipole expansion. Multipole because all type of poles will be present. Multipole expansion. And this will be also in far point. And this will be some VR comma theta. We will try to write the potentials. Multipole expansion. Right? अब देखो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा मुझे? There will be some volume जिसमें हम calculation कर रहे हैं. This is that volume suppose. And due to this volume in this charge system is present, right? And due to this volume there is a potential. So let me consider a small charge system. The charge is there everywhere. This can be a sphere, this can be a shell, this can be a cylinder. So I am considering a small charge configuration and because of this there will be a potential P. And this small charge, let me represent it. There is a simple notation कि जहां पे भी सोर्स को रिप्रेजेंट करना हो डैश से रिप्रेजेंट कर लो. तो अगर आप चाहो तो उससे हम कर सकते हैं. So this is a small volume, suppose d tau present in this total volume, right? And there will be a origin. तो इसलिए अब नोटेशन देखो जरा ध्यान से. ओरिजिन से जो P पॉइंट है जहां मुझे पोटेंशियल निकालना है इसको मैं R कह देता हूं. ओके ठीक है भाई. और ओरिजिन से जो वॉल्यूम है सोर्स जिसकी वजह से पोटेंशियल निकाल रहा हूं इसको मैं R डैश कह देता हूं. आर यू ओके विद दिस? एंड फ्रॉम ओरिजिन ये जो चार्ज है इस चार्ज की वजह से यहाँ पोटेंशियल निकाल लो. इसको जैसा चाहो ऐसा रिप्रेजेंट कर लो. यहाँ कैपिटल R खाली है तो चलो कैपिटल R से लिख लेते. एंड this is the angle, let me write it as theta dash. So the same notation I am writing it the same which is given in Griffith. Okay, but यहाँ पे वो वाला R लिखा है तो सब लोग कई बार उसको लिखने में mistake करते हैं. That's why I put capital R. Okay, तो understand it physically कि ये कोई टेढ़ा मेढ़ा वॉल्यूम सिस्टम है जिसमें चार्जेस प्रेजेंट हैं. तुम वो इंफॉर्मेशन बाहर लाना चाहते हो. उसका क्या तरीका है? तो उसका तरीका ये है कि किसी पॉइंट P पे मैं पोटेंशियल लिखूं और वो पोटेंशियल इनफाइनाइट सीरीज के फॉर्म में आ जाएगा. एंड दैट सीरीज विल रिप्रेजेंट कि अंदर क्या क्या चल रहा है. व्हाट इज द इंफॉर्मेशन इनसाइड. ओके, दैट इज आवर पर्पस. सो नाउ प्लीज सी, ये थीटा तुम्हारे नोन थीटा में से कोई भी नहीं है. ये बात ध्यान रखना. ये थीटा क्या है बताओ भाई? ये थीटा डैश क्या है? व्हाट इज दिस थीटा डैश? एंगल बिटवीन R dash and charge. तो नहीं, पहले सब लोग ये ध्यान दो कि व्हाट इज दिस सोर्स. व्हाट इज दिस? Infinitesimal volume. Source charge. of some charge. There is some charge present, but this source is not only here. This is present everywhere in the volume. That's why finally integration will be needed, right? Yes or no? Yes, sir. What is this? Yes, sir. This is distance between source and the point where you want to calculate potential.
What is this? This is distance between origin and the point. So finally, you would like to write everything in terms of this origin. This R, right? And some theta, right? थीटा Some theta. अभी ये थीटा Sir. जो है बस उसको ये समझ लो कि ये थीटा क्या है. हाँ. सर ये वही थीटा है ना सर जो आप भी आर ऑफ थीटा लिखा नहीं, ये वो थीटा नहीं है. ये थीटा क्या है? सर तो देखो वो ना. थीटा कौन सा एक मिनट, अभी हाँ. वो तो हमारे किसी कोऑर्डिनेट सिस्टम का होगा ना भाई. जब तुम ऐसे यहां लिखते हो तो इट मस्ट बिलोंग टू सम कोऑर्डिनेट सिस्टम. बोलो. यस सर हाँ सर इट मस्ट बिलोंग टू सम कोऑर्डिनेट सिस्टम. बट यहाँ पे तो हमें सिस्टम को देखते हुए लिखना पड़ा ना. ओके. ये किसी केस में सेम भी हो सकते हैं, यस सर बट किसी केस में नहीं भी हो सकते. यही तो समझने वाली बात है. दैट्स व्हाई डेरिवेशन इज नीडेड. कि हम अब जैसे मान लो कि मैं कह दूं कि ये जेड एक्सिस है, राइट. ये वाला इस वाले sir. पॉइंट पी को मैं जेड एक्सिस पे कर दूं तो जेड एक्सिस के साथ ही जो पॉइंट बनेगा वो तुरंत थीटा हो जाएगा. तो वी विल सी दैट इन व्हाट पर्टिकुलर केस इट इज. अभी बस सब लोग ये समझ लो कौन सी चीज क्या है. इज दिस ओके? ओके टू एवरीबॉडी? यस सर तो अब बताओ जरा यहाँ पे पोटेंशियल क्या होगा उस चार्ज की वजह से. इट विल बी इंटीग्रल 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट. बोलो भाई. या इस चार्ज की वजह से यहाँ पे पोटेंशियल लिखना है. तो चार्ज Rho dash. Rho deta हो. सपोज रो, राइट. तो इट विल बी सम रो. हाँ, रो पे भी dash. चाहो तो रो पे भी डैश लगा लो टू जस्ट शो दैट इट इज फ्रॉम ओरिजिन. बट कोई जरूरत नहीं है रो पे भी अगर तुम चाहो, बिकॉज दिस चार्ज डेंसिटी यू आर टेकिंग एट सम r dash, राइट. बिकॉज that will also vary with the distance ना. Are you getting it? भाई चार्ज डेंसिटी जरूरी नहीं ना कांस्टेंट हो. So you can take it like Yes, this. And ये हो गया d tau dash. ये बन गया चार्ज. And over, बताओ भाई over क्या लिखूं? R. कैपिटल R. अरे भाई हाँ. ये डिस्टेंस ही तो होगी पोटेंशियल ना. This is like a point charge. Right now, what is this cube equal to? This is like a point charge. It is behaving like a point charge, right? And we are writing potential because of this charge. So is this okay? V is equal to 1/4 Yes, pi sir. epsilon naught rho d tau by r. ये है potential. अब इसको ही हमें वही कलाकारी करके लिखना पड़ेगा जो अभी तक हमने करी थी. तो जरा फटाफट करते हैं. What is that law? Cosine law लिखो जरा. हेल्प करो. R square will be equal to, tell me. R square R dash R dash square minus 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 R 2 R dash cos theta dash. Is this okay? यहाँ पे किसकी जरूरत है? 1/r की. जल्दी जल्दी लिखो. So R square will be equal to R square 1 plus R dash by R whole square minus 2. So R square is common. So it will become R dash by R and cos of theta dash, right? It will become like this. And you want Yes, 1 by R. So what it will become? 1 by R will become 1 by R. And here 1 plus 1 minus 1 plus R dash R whole square R dash by R whole square minus 2 R dash by R cos of theta dash to the power. Follow. Minus. minus 1/2. Is this सर okay? यहाँ पे वो R Yes. कुछ नहीं सर कुछ नहीं बोलो बोलो मेरे- जिनके बोलो. सर वो टर्म जाएगा ना सर R dash अपॉन R स्क्वायर वाला R for सर स्क्वायर टर्म सर स्क्वायर टर्म नहीं नहीं नहीं. यही तो बात है ना कि अभी तो